Hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me Satvik. And मैं ना यूजुअली ये वाले एपिसोड्स करता नहीं हूँ बट मेरा बहुत फैन बॉय वाला एपिसोड होगा ये. I, Lamine Yamal might be the closest thing I've seen to Lionel Messi over the last, 10 odd years. And a lot of you might laugh at me and हंसी आ रही होगी या मजाक उड़ाएंगे या बोलेंगे तू पागल हो गया है क्या. But यार, I have been just fanboying over that guy over the last couple of weeks. You know, लास्ट ईयर भी यमाल ने अपना डेब्यू लास्ट ईयर कर लिया था इन वन ऑफ द लीग मैचेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 साल की एज में. एंड but this season he just looks so mature. He just does not look like someone who's 16 years old. And सब शुरू हुआ था जब वो टॉटनहम हॉटस्पर के साथ प्री सीजन आई थिंक जोआन गाम्पर ट्रॉफी का मैच था वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. And he scored a goal and provided a couple of assists, and his entire play was so phenomenal यार. I was honestly shocked कि भाई ये 16 साल का है. एंड फिर क्वेश्चन ये आया कि ये तो चलो प्री सीजन का मैच है, प्रीमियर ला लीगा में कैसे परफॉर्म होगा. बट ever since Rafinha got that red card and he started for us, and रफीनिया के वापस आने के बाद भी चावी हैज बीन स्टार्टिंग लमीन यमाल. And the fact that this guy has been called to the senior Spain squad at the age of 16, that tells you how promising this guy is. And यार, हमेशा ना क्या होता है जब भी हम एक बहुत यंग टैलेंट और यंग सुपरस्टार आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऑब्वियसली हम प्रेशर डालते हैं, बोलते हैं ये नेक्स्ट मेसी बनेगा, ये रोनाल्डो बनेगा. एंड a lot of time जो ये players होते हैं ना, these players have the skill. And स्किल के बेसिस पे हम यूजुअली कह देते हैं कि इसमें पोटेंशियल है. पोटेंशियल इज द राइट वर्ड. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जो प्रॉब्लम होता है ना, जो गैप होता है इन प्लेयर्स के लिए फॉर देम टर्निंग इनटू द सुपरस्टार दैट पीपल थॉट दैट दे वुड. बोयान करके हो गया आपका एग्जांपल, जो जिसको अनदर मेसी कहा गया था. एंड देयर बीन अनदर टन्स ऑफ प्लेयर्स. तो उसमें जो गैप आता था ना सबसे बड़ा, वो होता था डिसीजन मेकिंग. And I think football में decision making is probably the most underrated factor यार. When to do what, I can do मतलब X player can do 100 skills and probably Messi never does a skill, and Messi is 100 times better than them because of decision making. I can do 50 step overs, but knowing when to do those 50 step overs, I think is probably the most important factor. And the difference between success and failure as well. So ये चीज इतनी important होती है ना हमारे लिए, सबके लिए, for a player to grow. And for that transition from being hoping to be a superstar, or from a potential to then ultimately a final product. And ये चीज मुझे लमीन यमाल में लगी है यार. I think that guy, the decision making that he's had over the last 3-4 league matches, it seems so right. And he knew when to pass, he knew when to probably dribble past and take a shot. And the Barcelona players were looking for him. और बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था ये, मैं ये नहीं कह रहा, but there was a certain glimpse of how, the Barca players used to look for Lionel Messi for him to do something. And चाहे वो विलारियाल के मैच में था, चाहे वो ओसासुना के मैच में था, whenever they wanted, थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट करना है, या they wanted someone to change the way of the game, everyone was looking for Lamine Yamal. And that was such a wonderful thing to see. And just shows कि उस player का potential क्या है actually. So not putting too much pressure on him, but that guy seems to be a one in a million yaar. And I just hope that Barcelona as a team do not overplay him, because आंसू फाटी के साथ यही हुआ था यार. पहला सीजन इतना ज्यादा खिला दिया उसको, एंड देन अल्टीमेटली इंजरीज केम हिज वे, एंड नाउ ही इज नॉट द प्लेयर दैट ही यूज्ड टू बी. So that is something that Barcelona has to be extremely careful about. And Lamine Yamal,
स्पेन के लिए भी अब इंटरनेशनल ब्रेक के लिए he's been called up to the Spain team as well. And I, just that experience will be so good for him, being with the likes of, Laporte, Gavi, Morata, Rodri, these players who won everything that there is to win, everything there is to win at club level. So, वो एक्सपीरियंस इतना एनरिचिंग होगा एक 16 साल के लड़के के लिए. एंड आई जस्ट होप दैट he transitions well into, from 16 to, let's say, early 20s, because I think that is the make or break of any player from a potential to an ultimate superstar.